हेलो 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 एवरीवन। फिर से आ गए और एक गेमिंग रिव्यू। अब बोल सकते हो काइंड ऑफ गेमिंग रिव्यू। शायद तुम लोग ने ये बहुत पुराना ट्रेलर है जो मैं देखने जा रहा हूँ, लेकिन गेम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। और ये जो है ये मेरे चैनल पे आने वाला ही है गेम। दो वीडियोस है, बैक टू बैक दो वीडियोस होंगे। इसमें खेलना है ये गेम, मुझे एक्सपीरियंस करना है। ये ऐसा ऐसा वाला फीलिंग है मुझे इसके लिए। हाँ। Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No! Friendly. Who are you? Who sent you? What's going on? They're coming. Who is? Chris? Sorry, Ethan. Why? ये है रेसिडेंट इविल विलेज। एक्चुअली विलेज नहीं है, ये है 8। ठीक है, ये वी है उसका 3 वो है, तो ये है 8, पार्ट 8। ठीक है, इससे पहले रिलीज हुआ था पार्ट 7। और जैसे तुम लोग को पता लग गया है, रेसिडेंट एविल मतलब ये हॉरर गेम है। तो भाई अगर तुम लोग को हॉरर गेम देखना है ना तो वेट करो, आने वाला है ये गेम। और मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे फटने वाला है। और ऊपर से भाई मेरा अभी देखो इसके साथ 2-3 चीज़ें नए आए। सिर्फ हॉरर गेम है, तब मैं इसके लिए साथ ही मैं अपना फेस कैम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को रिएक्शन भी देखना होगा। ठीक है, अब पूरा रूम भी मतलब डार्क ही रहेगा करीबन। और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले इस गेम को कवर कर दूँ भाई। आधे रास्ते में छोड़ दूंगा डर के मारे। ठीक है, तो ये गेम तुम मान सकते हो मैं खेलना स्टार्ट कर दूंगा मई 8 से या फिर मई 9 से। इन दोनों टाइम पे मैं स्टार्ट कर दूंगा इस गेम को खेलना। ठीक है, तो ये गेम आ रहा है भाई, ये गेम आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ ये गेम आ रहा है, मुझे ये गेम खेलना है। ठीक है, और भाई क्योंकि ये हॉरर गेम है, मैंने अब तक जितने भी गेम्स खेले वो भी वो फाइटिंग बेस्ड है, कुछ मतलब गन्स स्वॉर्ड्स इस इन सब के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कुछ कुछ हॉरर गेम नहीं खेला है। दूसरे पार्ट पे आता है जहाँ पे जो रेसिडेंट इविल के जो टीम विलेज मतलब रेसिडेंट इविल विलेज का जो टीम है, उन लोगों ने कुछ एक वीडियो बनाया, वो देखता है। Hi, I'm Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. And I'm Pete Fabiano, also producer on Resident Evil Village.
स्पेशल डेवलपर We hope मैसेज you all had the chance to check out and enjoy our trailer. एकदम Some of you are probably wondering why we didn't just call the game Resident Evil 8. Well, यस it's still the 8th in the series, and we're treating it as such. You can even see the Roman numeral 8 in the game logo, so it's Resident Evil 8, just not in name. Yeah, I like the play on the design and simplicity in the name. PS जब लॉन्च हुआ तब दिखाया गया था ये गेम का रिलीज, मतलब टीजर दिया गया था, तो तभी से मुझे बताया गया था कि 8 है, मुझे समझ में आ गया था। But we'll touch more on that a little later. For now, why don't we just jump in and let viewers know a little bit more about the game itself? First off, Resident Evil Village will be available on PlayStation 5, Xbox Series X, and Steam. And in line with previous Resident Evil titles, we're using RE Engine. That engine brought Resident Evil 7 Biohazard, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, and most recently, Resident Evil 3 to life. We were able to take all that we learned from those titles, along with our internal development efforts, and optimize the latest version of the engine for the next generation of consoles. With the combined power of Next Gen and RE Engine, we can take our developers' vision to new heights. Once again, we're planning a fresh take on survival horror, this time upping the ante on action a bit. Realistic graphics Okay. and immersive no load times will really draw you into the world we've created for Resident Evil Village. Speaking of which, the game takes place a few years after the events of Resident Evil 7 Biohazard. Right, and it follows the story of protagonist Ethan Winters. Ethan's gone back to living an ordinary life, but of course, it wouldn't be a proper story without a new challenge to overcome. Chris Redfield, a decorated hero fighting against bioterrorism, makes his return, but not in the way you'd think. He's the reason Ethan's life gets turned upside down. Let's take a look at some key art. You can see Chris looking dark and far more brooding than in earlier Resident Evil appearances. The last thing worth mentioning in terms of characters here is the village itself. It plays such a crucial role as the backdrop and setting of the game that we consider it very much its own character as well. Wow. Alright, shifting gears, let's talk a bit about the game's design. You'll notice the familiar first-person perspective from Resident Evil 7 Biohazard. भाई ग्राफिक्स सब It बहुत really बेहतरीन helps लग bring रहा है। players into the world. It makes them feel like they are Ethan, with the same sense of heightened tension and fear. Here's a quick look at the game running in engine. The team is working really hard to create a great experience. You हाँ, can really see detailing the देख लो। details, even close up. Let's take a look at the inventory. For players familiar with Resident Evil 7 Biohazard, or the recent versions of Resident Evil 2 and 3, you'll be right at home. We hope you enjoyed this additional look into Resident Evil Village. Oh, and here's one more piece of key art. You might want to pay extra close attention to this one. There's a lot that's being shown in it. So much so that we debated whether or not to actually put it in the announced trailer. Take a look and let your imagination run wild. We are aiming to have more to show you towards the end of summer. So, until next time. तो भाई ये था रेसिडेंट एविल विलेज या फिर रेसिडेंट एविल पार्ट 8। तो भाई कैसा लगा ये ट्रेलर बताओ मुझे, कमेंट करो नीचे। तुम लोग एक्साइटेड हो कि नहीं देखने के लिए वो भी कमेंट करो, और पहले ही दिन में देख लो इसको तो जाओ यार, दोस्त लोग को बोलो शेयर करने के लिए, शेयर करो दोस्त लोग से, दोस्त लोग को ही बोलो शेयर करो भाई इसको, और सब्सक्राइब करो भाई। बेहतरीन सीरीज होने वाला है। एक साइड पे चलेगा रेसिडेंट एविल और असैसिन्स क्रीड, देखते हैं तब तक खत्म होता है कि नहीं, शायद नहीं होगा वो। और दूसरे साइड पे चलेगा मेरा FPS गेम्स। तो अभी क्योंकि मैं सोच रहा था मतलब वैलोरेंट है तो एपिक्स लेजेंड भी खेल लूँ मैं एक बार। देखता हूँ भाई क्या होता है, क्या सीन बैठता है उसका तो क्योंकि मेरा लैपटॉप का स्टोरेज उतना ज़्यादा नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो अगर अच्छा लगा है भाई ये ट्रेलर और जो भी है भाई, इसको तो भाई रिव्यू घंटा ही बोल सकते हैं, कुछ भी रिव्यू नहीं है, जब तक गेम खेलूंगा तो रिव्यू नहीं दे पाऊंगा। तो जो भी है रिएक्शन बोल लो, जो भी बोल लो भाई इसको। तो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो दबा के, कमेंट करो दबा के, और शेयर एंड सब्सक्राइब भाई करो ही करो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।